Okay, we will start. So today topic is the synthetic fiber forms, properties and their identification. We have studied about the different fibers, either natural or synthetic fibers. So natural fibers we have covered. Now it is a synthetic fibers, and these fibers are used nowadays, are most commonly used in the construction of fishing gear, all the trawl gear, then gill net, pershing, surrounding gear, all the gears we have to use the fibers for construction of netting. So we will go one by one. So synthetic fiber. So basically this development of synthetic fiber generally started around 1920 by a scientist H. Strondinger. So he won a Nobel Prize for chemistry in 1953. And these synthetic fibers are man-made fiber manufactured by chemical synthesis of simple substances. Generally, we are using a phenol, benzene, acetylene, or sweet acids. So these are the simple compounds we are using for manufacturing or producing of synthetic fibers. Okay. Then, depending on the type of polymerizations, these synthetic fibers are grouped into 4 compounds. First one is the polycondensation, then polymeric, then mixed polymer, and then polyadditive compounds. In case of polycondensation compounds, in this process of fiber making, polycondensation process of fiber making, in this process water is eliminated, and the compound which produced by these reactions are, example is the polyamide, polyester, then some trade name of polyester is the terylene, but whereas the polyamide, some trade name means if you are going to the market, instead of asking about the polyamide, if you are asking to the shopkeeper that I need a nylon, so they will give nylon netting materials, or amylon, nylon, amylon, you may note down, nylon, amylon, podolon, capadon, and most commonly come in competitive exam. Trade name of polyamide is the nylon, amylon, then podolon, capadon. Okay. Rajpriya is coming late. Then polyester trade name is the terylene or dacron. Terylene or dacron. You can see here example of polycondensation compound. In this process, water is eliminated during the process of fiber making. Example is polyamide. Trade name of polyamide is a nylon, amylon, then podolon and capadon. Whereas polyester trade name is the terylene and dacron. Don't forget. Then second process of fiber making or polymerizing is the polymeric compound. In this process of fiber making, water is not eliminated. Whereas in case of polycondensation compound, water is eliminated. Example is polyvinylidene chloride, PVC. PVC is the first synthetic fiber. PVC was the first synthetic fiber that produced on industrial scale and used in the fishing gear constructing material, or first synthetic material used for fishing gear. जितने भी compound है synthetic fiber, out of that PVC was the first that was produced on industrial scale and that was used first during the gear process making or netting construction making. PVC, don't forget, most commonly come in competitive exam. Then another example is the polyvinyl alcohol. So third one is the mixed polymer. Mixed polymer, these are formed by copolymerization of mixture of vinylidene and vinyl alcohol. Don't forget the compound, which compounds is used for manufacturing which compound.
So mixed polymer, we are co-polymerizing the two compound vinylidene and vinyl alcohol. Example is the polyamide polymolidine chloride, PVD, polymolidine chloride. Then fourth is the polyadditive compounds. In case of polyadditive compounds, monomeric unit, say for example polyethylene. So what monomeric compounds we are utilizing? So here we are using we are polymerizing the compound in a simple additive manner. Say for example polyethylene. So ethylene molecules we are polymerizing to produce the polyethylene, like polypropylene. Propylene. So propylene compounds are used as a monomeric compound, and these monomeric compounds are polymerizes during the polyadditive compound reaction. So example is the polyethylene and polypropylene. Now, sorry. सर Yes. सर ये वाटर कैसे रिमूव होता है सर, ये कैसे सर थोड़ा बता दीजिए क्या क्या? डिटेल्स में। सर ये वाटर कैसे एलिमिनेट होता है सर, ये थोड़ा बता If दीजिए the two डिटेल्स। compounds will join, if the two compounds, monomeric compounds will join together at the time of bonding or at the time of joining, the water molecules will be eliminated. Like hydrolysis, you see na, hydrolysis jaisa hota hai na process, that is in our body reaction, how the enzyme is acting. And agar if you are combining two compounds, so at the time of joining from these two molecules, at the bonding, where the bonding or joining process is taking place, from that place H2O, water molecules will be eliminated. That's all. एग्जांपल बता दीजिए सर। Example is polyamide ना, polyamide, poly condensation reaction होंगे तो water will be eliminated. Example is polyamide, then polyester. Example is your that ना, polyamide और polyester. Polyamide जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो डेफिनेटली जब हमारा एमाइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइन करेगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वाटर विल बी एलिमिनेटेड. अंडरस्टूड? यस सर, व्हाई ओनली वाटर इज एलिमिनेटेड? बिकॉज अमोनिया भी तो जब हमारा ज्वाइंट, जब if you go to the structure level, you see the structure of polyamide, you see यस सर, the structure will be there na. So amide molecules when they are joining, at that time जो ग्रुप हमारा एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है, उस समय में दोनों कंपाउंड से H दोनों तरफ से जाएगा एंड देन ऑक्सीजन एक तरफ से. So H2O molecules will be eliminated. हाँ, किसका H जाएगा, किसका OH जाएगा सर? थोड़ा रिएक्शन लेकर के बता दीजिए सर। रिएक्शन तो अभी तो हमारे पास नहीं है, बट आई कैन शो. ठीक है, वन कंपाउंड अमाइड, अनदर कंपाउंड इज अमाइड. ठीक है, एक से H जाएगा, दूसरे से OH जाएगा, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करेगा. सो देयर विल फॉर्मेशन ना. किसका OH जाएगा? अरे एक कंपाउंड है सपोज अमाइड, दूसरा है हमारा अमाइड, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेगा. सो फर्स्ट वाले से H जाएगा तो सेकंड वाले से OH जाएगा. ऐसा भी हो सकता है सर, सेकंड वाले से ऐसा भी हो सकता है सेकंड वाले से OH जाए, फर्स्ट वाले से H जाए. So it depends upon the which means OH, कौन से कंपाउंड का OH जो है ओपन फॉर्म में है और वो दूसरे से रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. अगर OH मॉलिक्यूल्स उसका ओपन रहेगा तभी वो दूसरे से बाइंड कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है हाइड्रोजन से, उसी से वो रिएक्ट कर सकता है. अगर वो OH मॉलिक्यूल्स उसके पास अवेलेबल ही नहीं रहेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल्स के पास या फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के पास, तो वो नहीं दे सकता है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है.
So it also depends upon the availability of the hydroxyl molecules which are responsible during the time of bonding or joining. Biochemistry, like I think you forgot. ओके किसका क्वेश्चन है ये सब, और किसी का ऐसा है तो आई नेक्स्ट क्लास आई कैन शो द रिएक्शन. यस सर. हाँ, स्ट्रक्चर लेवल पे गणित यू आर ना. यस सर. अच्छा ठीक है, ठीक, इट्स ओके. देन is that okay? Now the physical properties. Synthetic fibers, we are having this polycondensation compound, then polymeric compound, then mixed polymer, then polyadditive compounds. Now coming to the properties. What are the properties? These properties are playing in the role if you are going for manufacturing of a particular gear. So first is the density of all this polymeric compound, synthetic fiber. So it depends upon the density is the mass per unit volume, generally expressed as gram per cubic centimeter. So fiber having a low density, less than 1, generally polyethylene and polypropylene. So those fibers having a low density, definitely it will float on the water, because it is having a density less than 1, whereas water is having density of how much? हेलो, सबसे वाटर का डेंसिटी, हाँ बोलो, हाईएस्ट डेंसिटी. Sir, one water has. Yes. So if it is less than that, definitely the material will float on the surface of the water. So hence it holds the more weight. So this polyethylene and polypropylenes having 0.96 density, whereas polypropylene having 0.91. This is most important and most commonly in your JRF, SRF, ARS exam. Density of polyethylene and polypropylene. Okay. So low density material gives more length, weight, and vice versa. This property of the material is significant. Generally, this density is mostly used. This property we have to, if we are manufacturing a surrounding gear, that times we have to keep in mind, because it depends upon the density. Sinking speed is important. Because if we are capturing a soiling behavior of fishes, generally surrounding gear we are using to surround the soul of the fishes. So that time, whatever the fishing materials, gear materials we are using for construction of the fishing gear, so density playing a role in sinking speed. Density playing a role in the sinking speed. अगर ज्यादा डेंस होगा तो क्या होगा, स्पीड हमारा कम होगा या ज्यादा होगा. अगर हाई डेंसिटी का मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं तो हमारा सिंकिंग स्पीड क्या होगा, कम होगा या लो होगा? सर ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. नो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर. होगा सर, कम होगा, लो होगा. कम होगा, लो होगा. High density material, if we are using to manufacture this fishing gear, तो sinking speed क्या होगा? सर हाई डेंसिटी में ज्यादा होगा सर. ज्यादा होगा सर. डेफिनेटली यार, सही. हम सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा जहाज का देखो या बर्फ का देखो, वो लोग फ्लोट क्यों हो रहा है हमारा पानी पे? कोई भी मटेरियल फ्लोट हो रहा है पानी पे, व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग लेस डेंसर, having a less density, that's why they are floating on the surface of the water. अगर हाई डेंसिटी रहेगा मटेरियल्स तो डेफिनेटली वो डूब जाएगा.
तो डूबेगा तो डेफिनेटली उसका स्पीड भी ज्यादा होगा कंपेयर टू लेस डेंसर. So that's why the sinking speed of the gear increases with the density of the material used in the construction of the fishing gear. So that's why अगर हम सराउंडिंग गियर बना रहे हैं तो उसमें हमें हाई डेंसिटी मटेरियल्स हमको यूज करना है सिंकिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए. अंडरस्टूड? क्यों सिंकिंग स्पीड हम बढ़ाते हैं? बिकॉज सोलिंग बिहेवियर हमारा फिशेज है, उसमें हम जितना जैसे ही नेट डालेंगे वो हमारा डूबना चाहिए. डूबने के साथ वी हैव टू क्लोज ऑल्सो, क्लोज करते हैं बॉटम को, तो वो जितना फास्ट होगा उतने ज्यादा अमाउंट में हम मछलियों को कैप्चर कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी. Then second one is the breaking strength. Breaking strength क्या है? It is the maximum force. अभी जितना भी हम कुछ बोल रहे हैं, this is the property of synthetic fibers. Synthetic fiber का property. So breaking strength is the one of the property in which what we are doing, we are applying a maximum force. Force we are applying. Why we are applying? We are applying a maximum force to that materials to rupture or to break. इतना फोर्स डालना है कि वो फोर्स को एक समय ऐसा आएगा जो वो टूट जाएगा. So how much force is applied to rupture the materials? So that is known as breaking strength of a particular materials. Generally it is expressed in kilogram force. And for measurement of this breaking strength test, special equipment is used known as dynamometer or breaking strength tester. So for breaking strength, the two terms is important: tenacity and tensile strength. Tenacity and tensile strength. Tenacity क्या है? Tenacity means ये है, it is the breaking strength per unit denier. अब now it question is coming, what is denier? Denier is the means एक हम मार्केट में अगर हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं, हम कोई भी फाइबर, चाहे वो सिंथेटिक हो या फिर हमारा मीन्स नेचुरल हो. सिंथेटिक फाइबर इफ यू आर गोइंग, अगर शॉप में जाएंगे तो यू हैव टू टेल दैट मेजरमेंट यूनिट ये है, हमारा सिस्टम है. One is direct system, another one indirect system. Direct system, two is there, one is denier, another one is text. Denier में क्या होता है? Mass per unit length. Denier is a direct numbering system. We are giving a number, direct numbering system. So mass per unit length, we are expressing in terms of mass per unit length. Say for example, polyamide है, ठीक है, मार्केट में हम परचेज करने के लिए जाएंगे तो हमें बोलना है आई नीड 220 डेनियर. बट ये 220 डेनियर है क्या? इट इज ए मास 220, मतलब मास जनरली वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ वेट. मास हो गया तुम्हारा ग्राम्स. सो 220 ग्राम्स पर यूनिट लेंथ. तो यूनिट इज फिक्स्ड. So 9,000 meter of a single yarn having a weight of 220 or 210 or 230. So here the length, mass per unit length is constant but mass is varying in case of direct numbering system. So this is the tenacity. Tenacity, it is the breaking strength. What is breaking strength? Breaking strength is the maximum force applied to a specimen or a fiber or a single yarn to rupture, to break. So tenacity is the breaking strength per unit denier. Per unit denier. Say for 210 denier. 210 denier is the 210 gram of a single yarn having a length of 9,000 meter.
9000 मीटर का हमारा सिंगल यार्न है, उसका वेट कितना हो रहा है 210 ग्राम. सो यू कैन एक्सप्रेस इज 210 denier. So this is direct numbering system. It will come later on. Okay. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना 10 से. सी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, देखो समझने की बात है. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है कोई भी सिंगल यार्न को या फाइबर को हमको रप्चर करना है, तोड़ना है. उस तोड़ने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. सो वी हैव टू मेजर. सो मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स चाहिए उस स्पेसिमेन को, उस सैंपल को, उस फाइबर को तोड़ने के लिए. सो इफ यू आर मेजरिंग फोर्स, कितना फोर्स यू आर, हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग टू कॉज स्पेसिमेन टू रप्चर. सो जनरली वी आर अप्लाइंग किलोग्राम फोर्स, एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम फोर्स. इस टेस्ट को या फिर अगर मेजर करना है तो फॉर दैट वी आर यूजिंग ए इक्विपमेंट. इक्विपमेंट इज नोन एज डायनोमीटर और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्टर. ओके. एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्पेस इन टर्म्स ऑफ टेनासिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ. ये दो मेन पैरामीटर है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, टेनासिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेनासिटी क्या है? It is the breaking strength per unit denier. Now question is coming, what is denier? Denier क्या है? It is a direct numbering system. जब हम कमर्शियल मार्केट में परचेज करेंगे फाइबर, सिंथेटिक ट्वाइन्स या सिंथेटिक फाइबर्स, so we have to specify. Either you are going in purchase, either you can go for purchase in direct number or indirect number. Direct number बोलता है mass per unit length. तो डेनियर जो है हमारा डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है. दूसरा जो है टेक्स है, टेक्स. तो डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम में जो डेनियर है, वो डेनियर क्या है 9000 मीटर, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बट मास वेरिएट करेगा. सो 9000 मीटर सिंगल यार्न का जो वेट है वो 210 भी हो सकता है. अगर 210 होगा तो उसको हम 210 डेनियर बोलेंगे. 220 है तो हम उसको 220 डेनियर बोलेंगे. 210 डेन भी बोल सकते हैं, 220 डेन भी बोल सकते हैं, 230 डेन भी बोल सकते हैं. If the question is coming 230 den, you have to express. How you will express? So you have to express 220 den means single 9000 meter of single yarns is having a weight of 220 gram. That is the 220 den, 220 denier. So that's why tenacity, this is also important and most commonly come in your competitive exam, JRF, SRF and ARS. So breaking strength per unit denier, that is the tenacity. Okay. Breaking load, generally we are means tenacity में breaking load जो है we are expressing in terms of gram and divided by, you can say, total denier. Then another one is tensile strength. Tensile strength, it is the breaking strength per unit area. Tenacity क्या है? Breaking strength per unit denier. Tensile strength है breaking strength per unit area and is expressed as kilogram per square millimeter. Understood? So अगर हमारा फाइबर वेट कंडीशन में है, जब हमारा फिशिंग मतलब जाते हैं तो उस समय पानी में रहता है, तो वेट कंडीशन में पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, it loses the breaking strength. Whereas polyester, polyethylene and polypropylene remain unaffected. अगर हम पानी में डालेंगे पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीएस्टर, तो उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन पॉलीएमाइड और पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे वो इफेक्ट करता है. सो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, इलास्टिसिटी.
जो मीन्स को रबर को खींचते हैं, एक नॉर्मल पोजीशन में वो है खींचा, दैट मीन्स वी आर गिविंग ए स्ट्रेस, स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, तो वो एक सम ड्यूरेशन तक ही वो इलास्टिसिटी अपना शो करेगा जहां तक उसके पास कैपेसिटी है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा अगर हम मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो फिर वो रप्चर हो जाएगा, देन अगेन इट इज ए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो elasticity is a property of material by which it tends to recover its original length. अगर वो नॉर्मल पोजीशन में है, अगर हम उस पे स्ट्रेस डालेंगे तो वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मींस बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी इट विल स्ट्रेच, और जैसे ही हम फोर्स रिलीज करेंगे तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। सो दैट मटेरियल इज शोइंग द इलास्टिसिटी or elastic property of the particular material. So elasticity is the property of material by which it tends to recover its original length and shape after removal with stress. समझ में आ रहा है ये सब इलास्टिक प्रॉपर्टी? अरे हेयर बैंड है, रबर है, उस पे हम देखते हैं ना, अभी वो नॉर्मल है, लेकिन अगर हमको किसी पे लगाना रहता है क्लिप में तो उसको हम स्ट्रेच करके लगाते हैं ना, और फिर वो अगर छोड़ देंगे तो वो हमारा, लेकिन इसमें ये भी है, इफ यू आर अप्लाइंग मैक्सिमम, मतलब कितना बार बार अप्लाई करेंगे, करते 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 उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, खत्म हो जाती है, वो लूज हो जाता है, देन द मटेरियल्स विल नॉट शो द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, सो दैट मटेरियल इज लूजिंग द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, so it depends. Then extensibility, this is the property of material to undergo extension or elongation under the influence of the force, कि वो कितने इलास्टिसिटी शो कर सकता है, जो भी जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना मैक्सिमम जा सकता है, सो दैट इज द एक्सटेंसिबिलिटी, मैक्सिमम पहुंचने का, जो जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन तक हम जा सकते हैं, दैट इज द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, सो दिस इज द वन प्रॉपर्टी. Then water absorption. Water absorption is the property of a native material in which what we are doing, if we are dipping into the water, definitely the materials will absorb the water. Hannah, if we are immersing or submerging into the water, so whatever the fibers or whatever the materials we are using, so based on their nature they will absorb the water. So how much percentage of water is absorbed by the materials, generally we are expressing as percentage of dry weight. So natural fiber absorb more water, whereas synthetic fiber do not absorb water, or they absorb less water, you can say. So this is the advantage of synthetic fiber और सिंथेटिक मटेरियल्स. अगर नेचुरल फाइबर्स अगर हम पानी में यूज करेंगे तो बिकॉज वी आर यूजिंग ए नेचुरल सोर्स, सो दे विल होल्ड मोर वाटर, दे विल एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द वाटर, वेयर सिंथेटिक मटेरियल जो है वो वेरी लेस, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं. तो अगर वाटर हमारा एब्सॉर्ब कर रहा है तो डेफिनेटली जब हम हॉलिंग करेंगे तो उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो वो अगेन हमको वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स और मोर मैन पावर वी रिक्वायर टू हॉल और टू लिफ्ट द नेट ऑन टू द डेक. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फाइबर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इट विल अब्सॉर्ब. देन श्रिंकेज क्या होता है, कंटिन्यूअसली दिस इज द रिडक्शन इन द लेंथ. होता है ना, कभी हम कोई क्लॉथ खरीदते हैं कॉटन के और मार्केट में जाते हैं और उसको वो हम वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, तो देखते हैं अरे जिस नया लिया था तो पूरा ढीला डाला हो रहा था, अभी जैसे ही लाया धोया उसको और पहना फिर से वो सिकुड़ गया. So that is the property of the particular material or the material used for making a cloth. So like that, in case of this gear, we are also using the fiber, synthetic fiber or natural fiber. So shrinkage is the reduction in length of a material due to wetting. पानी में देंगे
तो because of that it will reduce in the length. So shrinkage is not a major problem in synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट नेचुरल फाइबर में होता है. क्यों? क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब हमारा करता है. सिंथेटिक फाइबर हमारा उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता. सो इट डिपेंड्स अपॉन द वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी. Then abrasion resistance. Abrasion resistance, it is the resistance of a material to wear off. Tear और wear जो हमारा होता है, so it is the resistance of the material. वो कितना wearness को हमारा रजिस्ट कर सकता है if we are rubbing against any surface, whether it is a smooth surface or hard surface. So this is also one kind of a property of material. Abrasion resistance of vegetable fiber is comparatively less. वेजिटेबल फाइबर्स का एब्रेशन, क्योंकि बार बार जैसे हम देखते हैं ना गांव घर में जो पहले कुआं होती थी, कुआं में देखते होंगे एक पुल्ली लगा रहता है और उस पे हम रस्सी को क्या करते थे, एक हमारा बकेट होता था, बकेट रख करके बांध करके कुएं से पानी उठाते थे. तो इफ यू आर कंटिन्यूसली, अगर हम रस्सी को खींच रहे हैं और कोई सब सरफेस के ऊपर में बार बार वो रोल हो रहा है और घिस रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो फाइबर है, उसमें जो यार्न है वो भी घिसेगा. एक दिन ऐसा आएगा जो भाई बकेट से पानी हम उठाए और एक दिन क्या हुआ, हमारा रस्सी टूट गया. हम गए थे कुएं से पानी लाने और वो बकेट कुएं में ही चला गया. अब हमारे पास ना बकेट है ना कुछ, हाथ में रस्सी है. अब रस्सी से पानी तो ले नहीं आ सकते. तो वो क्यों टूटा? बिकॉज जो रोप हमने यूज किया था और जो रोप मतलब जिससे बनाया गया था, जनरली नेचुरल फाइबर्स वी आर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए रोप, तो वो एब्रेशन रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा नहीं था. इसके कारण वो है कंटिन्यूसली अगर हम घिस रहे हैं तो डेफिनेटली वो वीक होते जाएगा और एक दिन हमारा वो टूट जाएगा. दैट इज द resistance of a material to wear off any part when rubbed against any surface, whether it is a smooth surface or a hard surface. Then staple fiber show lower resistance to abrasion than continuous fiber. So this is a form of fiber, staple fiber or continuous fiber. It will come. Then sinking speed, already told, it is most important in case of surrounding air. And this is the speed at which material sinks into the water, through the water. And most important in case of surrounding, this property is the most important in case of surrounding air if we are manufacturing. So you have to think about which materials we have to use, whether it is a low density material or high density material. Then visibility, that means जो materials we are using, if we are using a materials for construction of a fishing gear, so अगर हम उसको पानी में डाल रहे हैं गियर को, तो जब हम बोट से पानी में डाल रहे हैं गियर को, तो उसकी विजिबिलिटी कितनी हो रही है? पानी में अगर हमने गियर डाला तो वो हमारी आंखों से विजिबल है या नहीं है? और जो हम मछलियों को कैप्चर कर रहे हैं, मछलियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ gill net. So it is the property of netting material to be seen in water during operation. This property is relevant for gear like gill net, already told. Then vegetable fiber is more visible than synthetic fiber. Vegetable fiber जो होते हैं, they are more visible. पानी में डाल दो, वो आंखों से दिखेगा, हमको भी दिखेगा और हमारी मछलियों को भी दिखेगा. तो गिल नेट में ये क्यों इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा होता है? बिकॉज मछलियों को हम कैप्चर करते हैं, तो मछलियां जो है अगर वो गियर को देखते हैं तो वो गियर को देख करके भागते हैं. जनरली the tendency is there, behavior is there, that if they are seeing that any obstacle in the path, they want to either cross the path or वहां से भागने की कोशिश भी करेगा. तो वही भागने के और क्रॉस के दौरान में ही वो फंस जाता है.
बट गिलनेट में हम क्या करते हैं, हमारा क्लोज्ड बैग सीपेज स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हमारा सिंगल वॉल वेबिंग रहता है, सिंगल वॉल वेबिंग, आइदर एक से बना होगा, और ट्रिपल नेट भी आजकल यूज करते हैं, ट्रैमल नेट जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें भी रहेगा। तो अगर वो विजिबल है रास्ते में तो मछलियां हमारा भाग जाएगा, तो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई द इनविजिबल जो होते हैं, जिसको मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं पानी में, उस तरह का मतलब हम गियर मटेरियल्स यूज करते हैं, उस तरह का सिंथेटिक मटेरियल्स वी आर यूजिंग। सो मोनोफिलामेंट इज मोस्ट मतलब इनविजिबल इन नेचर and transparent. So monofilaments we are using for gillnet. Gillnet को बनाना है तो monofilament is, and this is most important and most commonly come your competitive exam. सर गिल नेट बड़े मछलियों के लिए यूज करते हैं सर? क्यों नहीं करते हैं यार, करते हैं ना। अच्छा ये टाइम भाई हमारा खत्म हो रहा है, हम अगेन फिर से ये क्लोज करके हम फिर से ये हो रहे हैं, मतलब ऑन हो रहे हैं, तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि ओनली 1 मिनट इज देयर, वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ यस ओके सर।